समरी। अभी जो हमने स्टडी किया है उससे पहले मैं दोबारा से आपको ये 5 कंपोनेंट बता देता हूँ सिंपल वे में कि एक पहले बच्चा टोटली स्पीचलेस होता है, उसे किसी के बारे में कुछ नहीं पता होता है, फिर उसके स्पीच साउंड्स आते हैं, उसे फोनोटिक्स बोलते हैं। देन वो फिनोमिनीज यूज करता है, उसे फिनोलॉजीज बोलते हैं, फिर वो वर्ड बोलना शुरू करता है, उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, फिर वो फ्रेजेस सेंटेंसेस को समझता है, उसे सिंटैक्स बोलते हैं, फिर वो लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेजेस और सेंटेंसेस को समझना शुरू करता है, उसे सिमेंटिक्स बोलते हैं। फिर बच्चे को पूरा टेक्स्ट को बोलना, समझना और डिस्कस करना आता है, उसे हम प्रैग्मेटिक्स बोलेंगे। समरी क्या है हमारी लैंग्वेज की? फिनोमिनी इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, एंड इज कंसर्न्ड विद द साउंड्स ऑफ अल्फाबेट्स। और ये किसके साथ कंसर्न होती है? आपके जो अल्फाबेट के साउंड्स है उसके साथ। फिनोमोलॉजीज जो है वो डील्स विद द साउंड्स इन अ लैंग्वेज, कि आपने साउंड्स को किस तरह से डील करना है एक लैंग्वेज, एक जुबान के अंदर। मोर्फोलॉजी जो है इज रिलेटेड टू दी वोकैबुलरी बिल्डिंग। मोर्फोलॉजीज में आप क्या कर रहे होते हैं? अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर रहे होते हैं। साइंटेक्स क्या डील करता है? ये स्ट्रक्चर को डील करता है ऑफ द सेंटेंस को और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन इट। सिमेंटिक्स क्या करता है? ये स्टडीज करता है मीनिंग इन अ लैंग्वेज। ये मीनिंग्स को, मतलब को उसके स्टडी करेगा। और प्रैग्मेटिक्स में आप क्या करते हैं? ये स्टडीज करते हैं ह्यूमन एक्शंस एंड देयर एक्सप्लेनेशंस बाय साइंस इन लैंग्वेज, कि ह्यूमन एक्शंस क्या है और उसको साइंस के साथ लैंग्वेज को एक्सप्लेन करेगा। ये आपके फिनोमिनी, फिनोमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स की एक समरी है। अब इम्पोर्टेंस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, ये स्टडी करते हैं। फिनोमिनी इज द बेसिक यूनिट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, समरी से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंस है और यही हमारी समरी है। फिर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन लैंग्वेज। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हम वो ये देखना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल असरात क्या होते हैं जुबान पे। लैंग्वेज डेवलप इज एन एवर चेंजिंग प्रोसेस, इट इज फेयरली अ प्रोसीजर दैट इज ऑलवेज एडवांसिंग। जैसे जैसे आप डेवलप होते जाते हैं आपकी लैंग्वेज की एक्सपर्टीज क्या हो रही होती है? एडवांस होती जाती है। The rate of these developments is affected by the environment, which plays an essential part in the language development of a kid. Language researchers see the similar attitude in teenagers' language acquisition everywhere throughout the world. Different perspectives exist that explain the effects of environment on language development. Skinner believes that language is gained in the same manner as behavior. Another perspective sees inheritance as vital in influencing language development. Some view that children learn language through cognitive skills, but some others attach social context to it. Language development at preschool and kindergarten level. From birth stage, this receptive language learning begins since childbirth. They pay attention to the verbal communication. They wake up by loud noise and feel still due to the noise. Expressive language children formulate sounds which realize that they are encountering agony or joy. From 0 to 3 months of age, respective language at this stage children form out how to swing to others when they talk. The children smiles when listens to the voice. They will quiet at the noise of it on the off chance that they are weeping. Expressive language, when an important individual comes in the vision, the child smiles at.
The children repeat the identical sound a lot and go when they are satisfied. 4 to 6 month stage is receptive language. At this stage, children act in response to no. The children likewise are receptive to ups and downs in tone of voice, except to the sound other than speech. In expressive language, at the age of 4 to 6 months, murmuring sounds happen when we play with the children. The procedure they produce sounds when they are involved merely in activities. The children babble at this stage and the children seem to be taking. At the stage of 7 to 12 months receptive language, the children at this time clearly listen when we spoke to him. The child looks at the face when we call him by his name. Children realize the names of familiar objects, mama, feeder, glass. Expressive language at the 7th to 12th month age, the child utilizes speech or different sounds, keeping in mind the end goal to stand out enough to be noticed. Child first words, most likely not tagged, unmistakably have appeared. Baba, Katu, Bye Bye, Tata. At the age of 1 to 2 years, respective language, children focal point to pictures in the book when we call their names, and they can indicate body parts when they are asked ear, neck, hand. Expressive language. The child is built up new words as time goes on. They can ask two words questions like who's papa, what's cat. At the age of 2 to 3 years, receptive language at this point, little child will comprehend two stage summons, get your socks, get your socks and place them in the crate and comprehend differentiating ideas or applications like hot, cool, stop, go, in, on and descend. 2 to 3 years में जो आपकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है बच्चे की उसमें क्या होता है द बेबी मे इंक्वायर or attract the attention for something by identification it like apple or by its traits red. At the age of 3 to 4 years, receptive language. The child understands simple questions like whose, when, why. They can listen to us when we call them and even from out of room. The child discusses happenings, campaigns, and interesting encounters around him with his friends and mates in expressive language. 4 to 5 years child receptive language. At this stage, children are being able to value different stories. They can answer crucial questions related to them. At 4 to 5 years stage, expressive language of a child, children talk easily in a quiet, easy to listen manner. They can develop long and clear cut sentences. We went to the hotel and ate fish, which was delicious. It was a great fun for all of us. Language development at elementary level. Vocabulary and grammar turn out to be conscious of the procedures and perceptions connected with words, and they turn out to be more logical in their way to deal with words. This logical methodology is clear if youngsters are requested the first thing that rings a bell when they hear the word. They figure out how to utilize language in a more associated manner. They can
deliver relating sentences to each others and creating portrayals characterizing stories that hang together and bode well. They must have the capacity to depict things orally before they can be relied upon to destroy those composed assignments. Language development at elementary level. Metalinguistic awareness. 4 points. Number one, awareness that language has the potential more prominent than that of straightforward images. Awareness that words are distinct from their reference meanings lie in our mind and not in the names. For example, Michelle is Michelle and Daniel is Daniel. Awareness that language has a structure that can be controlled, understanding that language is impressionable. Things can be changed and composed in a wide range of courses. For instance, if something is composed in a linguistically erroneous manner, you can transform it. हम एक स्मॉल से रिवीजन करते हैं कि यूनिट 7 में लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमने ऑब्जेक्टिव स्टडी किए, फिर लैंग्वेज क्या होती है ये स्टडी किया, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट की डिफरेंट हमने स्टेज स्टडी की, 9 मंथ, 18 मंथ, 13 मंथ एंड 2.5 ईयर टू 5 ईयर्स। फिर हमने डायग्राम देखी कि बच्चा किस किस तरह से सीखता है। फिर हमने रेफरेंशियल लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टडी की। उसके बाद हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टडी किया। फिर हमने ट्रांजिशन इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन कब होती है, सेकंड कब होती है, थर्ड कब होती है। फिर की साइंस और लैंग्वेज डेवलपमेंट जैसे बैबलिंग, गेस्चर्स, कैरिंग, कूइंग, बैबलिंग, गेस्चर। फिर हमने रिकॉग्नाइज लैंग्वेज साउंड्स देखे, फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ, फर्स्ट वर्ड बिटवीन 8 to 12 month, फिर 1.5 years old, फिर 2 words utterances एंड एक्सप्रेशंस। फिर हमने उससे रिलेटेड एक डायग्राम देखी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स 3 माह, 6 माह, 12 माह, 18 माह, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के बच्चे किस तरह से करते हैं। फिर थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने डिस्कस की, जिसमें लर्निंग पर्सपेक्टिव्स हैं, नेटिव पर्सपेक्टिव्स और इंटरक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव हमने स्टडी किया। फिर हमने कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज देखे, जिसमें हमने फिनोमी, फिनोमिनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, साइंटिक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स को स्टडी किया। फिर हमने डिटेल में फिनोमिनी को, फिनोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी को, साइंटिक्स को, सेमेंटिक्स को, प्रैग्मेटिक्स को स्टडी करने के बाद इससे रिलेटेड डायग्राम स्टडी की, जिसमें हमने डिटेल में लिंक किया कि फोनेटिक्स स्पीच साउंड से रिलेट करता है, फिनोलॉजी फिनोमिनीज के साथ, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स के साथ, सिंटैक्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस के साथ, सेमेंटिक्स लिटरल मीनिंग ऑफ फ्रेजेस एंड सेंटेंस के साथ, और प्रैग्मेटिज्म कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कोर्स के साथ। फिर इसकी समरी, देन हमने इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस देखे लैंग्वेज से रिलेटेड। उसके बाद हमने डिफरेंट स्टेजेस किंडरगार्टन और प्री स्कूलिंग के लिहाज से लैंग्वेज को डिस्कस किया। फिर हमने एलिमेंट्री लेवल के वोकैबुलरी और ग्रामर को डिस्कस किया, एंड देन लास्ट में लैंग्वेज डेवलपमेंट एट एलिमेंट्री लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 7 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन लर्निंग एंड क्लासरूम टीचिंग।